5. That is your polynomial interpolation. Polynomial interpolation and approximation. Since every chapter has its own motivation, in the first chapter हमने क्या डिस्कस किया था कि हम कैसे नंबर को स्टोर करें, उनमें क्या एरर हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकाल रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि कई बार हमारे पास इक्वेशंस ऐसी हो जाती है, ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम है, जिनका एनालिटिक सोल्यूशन नहीं अवेलेबल होता। हम किससे मूव निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल सोल्यूशन हमने डिस्कस किया कि हम कुछ मेथड से लगा सकते हैं। हर मेथड की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड हम किस पे लगा सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में हमने डायरेक्ट मेथड किया, अगर मेरे पास सिस्टम है इक्वेशन का। फोर्थ चैप्टर में हम आइटरेटिव टेक्निक पे गए। नाउ दिस पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, why we are doing this and what do you mean by interpolation? Suppose you have some data of any city. Suppose you have any data that if you are taking milk consumption of a city, milk consumption of city in different years, right? जैसे अब आपके पास डाटा है कि किसी भी सिटी की मिल्क कंजम्पशन है, जैसे एक्स है, दैट इज अप टू योर ईयर, कि मैंने किसका कहा 2000 का कहा। नेक्स्ट मैंने चेक किया मिल्क कंजम्पशन 2002 में कितना है, 2005 में कितना है, मिल्क कंजम्पशन 2009 में कितना है। तो सपोज मिल्क कंजम्पशन जो मेरी थी 5 में, मेरी मिल्क कंजम्पशन थी सपोज 2.5 लीटर, यहाँ 2003 में टू में मेरी 3.5 होगी, ये सपोज मेरी इसमें क्या होगी 5 होगी, यहाँ पे सपोज मेरी 7.9 कंजम्पशन होगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि नाउ आई कैन प्लॉट दिस डाटा, फाइन। सो दिस आई कैन टेक एक्स, so if I have this quantity, I can plot it over here. So this can be my this year 2002 to 2000. If I'm plotting, this is 2002. If I'm taking, this is 2005, and this is 2007, and this is I'm taking 2009. I'm taking. So this I'm taking x as this is in years. On x-axis I am taking years, and on y-axis I am taking milk consumption. That means I am saying in 1000 liters, right? So this is your 2.5 something, and this may be your 3, and this may be 3.5. If you extend it, so this can be your 5, and this can be suppose this is suppose 8. So now you have 2.5 over here, 3.5 over here, and this is your 5, and again in 2009 you have something your 7.9. So if you find, now you know the data points, आपको यहाँ पे 2000 पे भी पता है वैल्यू क्या है, 2005 पे भी पता है, 2002 पे भी पता है, 2009 पे भी पता है, but if I want to evaluate कि milk consumption, what will be my milk consumption of that city in year 2001, or I say 2007. So what will be this? Now because the data is only given to you for some points, these points जहाँ पे हमें data given होता है हम उनको nodal points भी बोलते हैं. So these are the nodal points. So what actually can I do? I can fit a polynomial. मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं अपने डाटा को इस तरह ज्वाइन कर सकती हूँ कि मैं उसमें पोलिनोमियल फिट कर दूं। तो ये जो हम फिट करते हैं वो पोलिनोमियल फिट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। दिस इज माय इंटरपोलेशन पोलिनोमियल। जो हम डाटा पुट करते हैं वो किसके भी हाथ पे पुट करते हैं, सो दैट, तो अगर मैं ऐसे पुट कर रही हूँ, अगर मैंने ड्रॉ कर लिया, तो आई कैन टेल what will be my milk consumption in 2002 year. This will be my milk consumption in 2002 year. This will be my milk consumption in 2007 year. Suppose if I am plotting it over here.
So this is suppose 2005 is over here, 2007. So suppose this, so this you can say that from here you can see this will be my this 2008. You can tell this will be your nearby 2008, and this will be approximating 2003 or 4. So if you are finding जो आपको डाटा पॉइंट्स दिए गए हैं, जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हो वो डाटा के बीच में ही कर रहे हो, देन यू से दिस इज योर इंटरपोलेशन. बट जहां पे आपका 2000, जैसे मैं कह रही हूँ 2000 सपोज 12 में क्या होगी मिल्क कंजम्पशन, तो वहां पे मैं अपने डाटा से बाहर जा रही हूँ, तो दैट इज योर एक्सट्रापोलेशन. So in your syllabus only there is your interpolation. So what is your interpolation? That predictions you are predicting predictions of this type. Predictions of this type can be obtained by using a function that fits in the given data. तो बेसिकली आप क्या बना रहे हो अपनी प्रिडिक्शन के लिए? एक ऐसा फंक्शन, जो फंक्शन ही तो बना रहे हो पॉलिनोमियल का. यू आर मेकिंग अ फंक्शन दैट फिट्स इन द गिवन डाटा, जो आपके गिवन डाटा में फिट हो जाए. दिस प्रोसेस जब आप फिट करते हो ऐसा फंक्शन, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन. फाइन. जब आप ऐसा फंक्शन फिट कर रहे हो जहां पे आप अपना जो आपका गिवन डाटा को फिट कर रहे हो, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर इंटरपोलेशन. अब क्यों पॉलिनोमियल थी? व्हाई पॉलिनोमियल? फाइन. So we are discussing the way we will fit the data. We will move through the polynomial. Fine. So आपने polynomials पढ़ा हुआ है कि क्या होता है polynomial. Polynomial, if I write any combination, क्या होता है? That is the combination of scalars and variable with its degree. Okay? With different degree. ठीक है, तो उनकी डिफरेंट डिग्रीज हो सकती हैं. ठीक है, तो आप जैसे यही कहते हो ना, पोलिनोमियल आपकी किस तरह की होती है? ए नॉट, जैसे मतलब मेरा स्केल हुआ a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an(xn). so this is my polynomial. ये जो polynomial है, this I am denoting p and x. Why I am writing it p and x? So this is polynomial of degree. क्या है इसकी डिग्री? दैट इज योर n. यहाँ पे अगर आपका an है तो वो नॉन जीरो होगा. ठीक है, जो क्वांटिटी आप लेके चल रहे हो, तो आपकी जो पॉलिनोमियल हो जाएगी उसकी डिग्री कितनी है? n. तो जैसे आप लिखते हो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. इसकी डिग्री कितनी है? 2. जैसे आप लिखते हो 2x प्लस 3, अगेन दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. इट्स डिग्री इज 1. फाइन. दिस इज इन वन वेरिएबल. कई बार आप 2 वेरिएबल्स में भी जाते हो, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर. हियर वी टेक द combined degree. This is x and polynomial in x and y, but its degree is 4, because the combined degree of x square and y square, that will be your 4-degree polynomial. So you are saying the polynomial आपकी क्या? That is the combination of scalars and variables. Scalars basically यहाँ पे ये क्या है? These my a and a naught, a1 and a2 and this up to an. These all are real constants. And n is your non-negative integer, because जो हम डिग्री लेते हैं पावर की, इसमें डिग्री जो होती है इंटीजर होनी चाहिए. सो n is your non-negative integer. Fine. So the n can be 0. जो लिख रहे हो 2, that is also a polynomial of degree 0. डिग्री क्या है यहाँ पे? 0, because I can write x raised to the power 0, that will be 1. So you have polynomial जहाँ पे आपके a0, a1, an जो आपके scalars हैं, these are scalars and these are belonging to real.
So actually what this is doing, so polynomial is a very beautiful mapping. जो आपकी polynomial है, that is a beautiful mapping. mapping कैसे है कि आप क्या कर रहे हो, पोलिनोमियल में अगर आप रियल नंबर डालो तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा, फाइन। इसमें अगर मैंने पोलिनोमियल मैं कैसे डिफाइन करी हूँ, 8 नॉट प्लस a1, so it is a beautiful mapping from real number to itself. अगर आप अपने जो, क्योंकि आपके जो स्केलर्स हैं वो आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो आप क्या करोगे, अगर आप उसमें नंबर सब्सटीट्यूट, जैसे ये आपकी पॉलिनोमियल है, एक्स इसमें सब्सटीट्यूट करोगे, इवैल्यूएट करोगे तो आपका रियल नंबर ही आएगा। जैसे मेरी पॉलिनोमियल ये थी p2x, मैंने यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करा, p2 निकालना है तो सब्सटीट्यूट कर दूंगी x की जगह 2, तो भी मेरा क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। यहाँ पे भी मैंने सपोज p1 p निकालना है तो x की जगह मैं p सब्सटीट्यूट करूंगी तो भी मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, दैट विल बी माय real numbers. So polynomial is a mapping from real numbers to itself. So it is a beautiful map function which defines from real number to itself, because we are dealing with the interpolation. So why actually, why only polynomial, why we are doing with the polynomial? Because सबसे पहला जब आप कैलकुलस में करते हो, कैलकुलस में हम क्या करते हैं, कैलकुलस जब आप पढ़ते हो सबसे पहले यही कहते हो, और किसी की एग्जांपल नहीं देते, आप कहते हो पोलिनोमियल्स आर माय कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, फाइन। So why you are doing polynomial? Because it is a continuous, and next the further calculations are easy with the polynomial. जैसे हमने क्या निकालना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, उसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, so that will be very easy if I have a polynomial. Continuous, क्यों हमने continuous, why polynomial? Because when we have to put data, जब हमने अपने डाटा में polynomial पुट करनी है तो मेरा ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने जो पुट कर दिया, मैंने यहाँ तो पुट कर दिया पर मेरे इस रीजन के लिए वैल्यू ही ना आए, यहाँ तो सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ तक तो वैल्यूज आ रही हैं पर इस रीजन के लिए ना आए। दैट मीन्स इट शुड बी कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, फाइन, सो दैट यू कैन इवेल्युएट द वैल्यू भी। ऐसा ना हो कि यहाँ पे नहीं आ रही आपकी वैल्यू, ऐसी नहीं आ रही, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब है इट शुड बी द कॉन्टिन्यूस फंक्शन सो दैट यू कैन इवेल्युएट। वंस यू हैव इवेल्युएट, अगर आपने एक बार अपनी पॉलिनोमियल निकाल ली इंटरपोलेशन की, तो आप कोई भी, आपको डाटा के बीच में कोई भी पॉइंट पे आपको वैल्यू कह दें तो आप वो निकाल सको। दैट मीन्स यू शुड हैव कॉन्टिन्यूटी ओवर देयर। सो एंड फर्दर वी हैव डन, हमें डेरिवेटिव करना होता है, इंटीग्रेशन करनी होती है। सो विद द हेल्प ऑफ, इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल, देन इट इज इजी टू solve for further calculation. Next, since we have done with the polynomial, so there are some remarks. So some remarks regarding the polynomial. So first is Pnx, जो मैं बता चुकी हूँ कि Pnx will be of degree n, will be of degree n if an is not equal to 0, and this is called the above form, the power form of polynomial. This is the power form of polynomial, जहाँ पे आप अपनी रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट मीन्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, Pnx, दैट इज योर a0 प्लस a1x प्लस anxn, तो ये आपकी क्या है, दिस इज योर पावर फॉर्म। वन इज व्हेन यू शिफ्ट योर polynomial, the other way Pnx आप ऐसे भी लिख सकते हो, Pnx कैसे लिख सकते हो, a0 प्लस a1x माइनस अल्फा प्लस a2x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस anx माइनस अल्फा n। So this is also a polynomial। कई बार हम ऐसे लिख देते हैं ना अपनी polynomial, x minus 2 and x minus 3, so this is also x minus 2 plus x minus 3, ऐसी कुछ polynomial लिख देते हैं, constant जैसे 2 ले लिया
तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अगर मैं इसकी डिग्री भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, जो सेंटर है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं अल्फा जो ले रही हूँ सेम। So this is form is called shifted form of polynomial. Shifted form of shifted power form. You have powers and you have shifted from the origin. यहाँ पे आपका जो था x minus 0 था, यहाँ पे आप origin पे थे, तो you have shifted. This is you have shifted your center. You have shifted power form. Fine. So in this also this alpha जो आपका belong कर रहा होता है, जो आपका अल्फा होता है वो भी कोई आपका रियल नंबर होता है। थर्ड, आप पी एन एक्स को जनरलाइज भी कर सकते हो, ऐसे भी होती है ए नॉट ए वन एक्स माइनस अल्फा वन, फाइन ए टू एक्स माइनस अल्फा वन इंटू एक्स माइनस अल्फा टू, जब हम पावर इंक्रीज करें ए एन एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू and this is x minus alpha n. So this form is, what is this? This is the generalization of shifted power form, because this is the generalization of shifted power form. So if, and this is also called Newton's form. Fine. So now if अगर आपका जो है अल्फा वन अल्फा टू और आपके सारे अल्फा एन जो है वो किसको कन्वर्ट कर जाएंगे, वो अगर आपके अल्फा के इक्वल होंगे, देन यू हैव सिंपल शिफ्टेड पावर फॉर्म। ठीक है। If you have alpha 1 alpha 2 जो आपकी quantities हैं, that is your equal to 0, then you have just power form. So when you deal with this power form, next actually what we are doing, जो हमें data points दिए जाते हैं, the data points which we are given, x जैसे हमें दिया हो रहा है y, basically these y points are based on some function, जो है function। अब हमें फंक्शन तो अननोन है, हमें पता नहीं है। अगर हमें फंक्शन ही पता हो, फाइन, हमें कोई भी पॉइंट हो हम निकाल सकते हैं। जैसे मुझे एफ एक्स मुझे पता है तो मैं F0 भी निकाल सकती हूँ, 1.5 भी निकाल सकती हूँ, 3 भी निकाल सकती हूँ। बट अगर मुझे फंक्शन पता है, बट अगर मुझे एक्स पता है, मुझे पता है यहाँ पे किसी फंक्शन की वैल्यू पे ये आ रहा है, मतलब मुझे पर्टिकुलरली पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू पता है। जैसे ये मेरा 0 के लिए सपोज मेरा 1 आ रहा है, 1 के लिए 2 आ रहा है, एंड फॉर 2 इट इज कमिंग आउट टू बी 4.5, एट 3 इट इज कमिंग आउट टू बी 7, 4 इट इज कमिंग टू बी 8। सो कोई ऐसा फंक्शन है तो क्या कर सकते हैं, जिससे इट मीन्स मुझे फंक्शन इज माई अननोन, राइट। So my function is unknown, but जो मुझे points, I know the value of some at some point, मुझे किसी point पे function की value put करते हैं, तो there is a one most important theorem that says कि आपकी जो polynomial है वो आपकी function के नजदीक ही lie करते हैं, and there will be very less distance. So one, the theorem is that your Virastro's and approximation theorem, it is that so Virastro's approximation theorem says that if suppose f is defined, suppose f is defined, f is defined and continues on the closed interval AB for each epsilon greater than 0. The proof is not in your syllabus, so we will not go for the proof. For each epsilon greater than 0, there exists a polynomial. There exists a polynomial Px such that your f of x minus Px
is less than epsilon for all x belonging to your AB। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर मेरा जो f फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एंड इट इज डिफाइंड ऑन सम इंटरवल AB, तो कोई ना कोई ऐसी पॉलिनोमियल पक्का होगी कि जब मेरा x बिलोंग कर रहा है उस क्लोज्ड इंटरवल में कि उस fx का जो डिफरेंस है px से वो बहुत ही माइनर होगा। दैट मीन्स व्हाट इट इज सेइंग एक्चुअली geometrically what we will have, so what we will have geometrically basically, so now we have this theorem, fine। So what it is saying, if you have any function, fine, so if you have any function like this, so suppose this is your any you have any function, this you have any function, suppose this is f, so what actually it is saying, so we have y is equal to fx because we have found value at some point of x। तो वो क्या कह रहा है कि आपका जो है fx जो है मीन अगर आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, so this will be your f of x minus epsilon, sorry plus epsilon, and this will be your fx minus epsilon, so there must be some polynomial which will be approximating your function। तो आपकी कोई ना कोई ऐसी polynomial पक्का होगी जो आपके फंक्शन को approximate कर रही होगी। This can be your any polynomial, ठीक है। तो कोई ना कोई आपकी पक्की polynomial आएगी जो आपकी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो दैट मीन्स जो आपकी एग्जिस्ट करेगी, जो आपको नोडल पॉइंट्स गिवन होंगे, दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू गिवन है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है, यहाँ पे, तो उनको तो वो एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट करेगी, बाकी नजदीक भी बहुत नजदीक वो अप्रोक्सीमेट कर सकती है। दैट मीन्स फॉर एनी फंक्शन जहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है तो वो पक्का पॉलिनोमियल होगी किसी भी फंक्शन के लिए। यू कैन चेक कि जैसे आपने टेलर सीरीज करी हुई है, इफ यू हैव एग्जांपल ऑफ इफ यू आर सेइंग y इज इक्वल टू ex, जो ex है दैट इज योर फंक्शन, फाइन। जो ex आपको होता है, आपका कैसा होता है, ex ऐसा होता है ना, that will be your like this graph, this is your ex graph, fine। so this is your x and this is your y, fine। so this ex जो है आपका वो होता है, this is your graph of ex। now जो अब आप जब आप टेलर सीरीज करते हो आप ex की क्या पॉलिनोमियल नहीं निकालते, पॉलिनोमियल क्या कहते हो, this is your 1 plus x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and up to so on। so that means जो ex होती है that is approximating by some polynomial जो आपकी बहुत नजदीक चल रही होती है, ठीक है, ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी नीचे भी हो सकती है, जो आपकी पॉलिनोमियल होती है। तो दिस इज योर अप्रोक्सीमेशन, फाइन। दिस इज योर पॉलिनोमियल जो आप टेलर सीरीज से निकालते हो, फाइन। जो आपकी टेलर सीरीज होती है वो भी अप्रोक्सीमेशन होती है किसकी, EX की, जब आपने फंक्शन को उसकी पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर दिया। द सेम यू कैन सी द एग्जांपल y इज इक्वल टू, अगर आपका sin x होता है, sin x इज योर फंक्शन, साइन एक्स आपका कैसा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है, फाइन। तो यहाँ पे आपकी साइन एक्स की वैल्यूज जो होती हैं ऐसे मूव कर रही होती हैं,
बट साइन एक्स की भी आपने पॉलिनोमियल डिफाइन करी होती है, क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो दैट मीन्स यू आर अप्रोक्सीमेटिंग दिस, लाइक नोडल पॉइंट्स पे तो उनकी सेम ही आएगी, पक्की के लिए आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो जो आपकी नियर बाय वैल्यू चलती है, ठीक है। सो दैट मीन्स पॉलिनोमियल क्या हो सकती है कि हर फंक्शन के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसी पॉलिनोमियल जरूर एग्जिस्ट करेगी जिसमें फंक्शन और उसका डिफरेंस बहुत माइनर होगा। So then in the next class we will start with the Lagrange interpolating polynomial.